हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 5। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पीकिंग का लास्ट टॉपिक है, दैट इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, ऐसे देखने जाओ तो ये वैरायटी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। हमने जो आगे की 4 वैरायटीज़ की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी आगे की जो 4 वैरायटीज़ थी, दैट इज रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर। आपको मेन फोकस रिपीट सेंटेंस और रीड अलाउड पे करना है। ओके, पूरा स्पीकिंग उस पर ही आधारित है। बाकी जो डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर है ना, वो एक्स्ट्रा मार्क्स है। अगर आपके परफेक्ट चले जाते हैं तो भी आपका ओवरऑल स्कोर यानी स्पीकिंग के अंदर 10 से 15 मार्क बढ़ सकते हैं। पर जो आपका 75 मार्क्स तक का है, दैट इज़ योर रिपीट सेंटेंस एज वेल एज रीड अलाउड। आपको ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने का है। आज का जो टॉपिक है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये 100% जीके बेस्ड है। मैं ना पीटी को स्किल बेस्ड कम और पेशेंस बेस्ड एग्जाम ज़्यादा मानता हूँ। आप 2 घंटा बैठ, इसलिए मैंने पीटी का फुल फॉर्म भी यही है, PTE, पेशेंस टिल एंड। ओके, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। पर मैंने ये फुल फॉर्म बनाया क्योंकि आप 2 घंटा लगातार बैठ के 61 क्वेश्चंस कैसे देते हो, कितना पेशेंटली देते हो, ये उस चीज़ की एग्ज़ाम है। इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको, रीडिंग अलग बात है, पर स्पीकिंग के अंदर इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़े जीके की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जनरल नॉलेज की थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, ज़्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं होंगे। होगा क्या, एक लाइन का क्वेश्चन पूछेंगे, वो एक लाइन का कोई भी ऑडियो चलेगा। वो ऑडियो आपको पहले सुनना है, समझना है, और वो सवाल होगा कोई। ओके, याद रखना वो एक क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन का एक वर्ड में आंसर देना है आपको। ओके, क्योंकि जो सही आंसर होगा, आपने सही वर्ड बोल दिया, विच डे कम्स आफ्टर थर्सडे, फ्राइडे। ओके, तो आंसर एक वर्ड में देना है, दैट्स इट। सही हुआ तो वो मार्क देगा, नहीं हुआ तो गलत। ओके, सो आप पहले क्वेश्चन सुनते हो, और उसके बाद बोलते हो। ओके, तो ये लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में काउंट होता है। लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में काउंट होता है। मिनिमम 5 आएंगे ये। ओके, मिनिमम ये 5 आएंगे, मैक्सिमम 7 आ सकते हैं। ओके, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब 5 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जिसमें पीछे वो ऑप्शन देते हैं, विच एनिमल इज बिगर, एलिफेंट और चीता। ठीक है, तो दैट टाइम वो पीछे ऑप्शन दे रहा है, यू नीड टू उन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना है, दैट्स इट। इसमें और एक वैरायटी क्या आ सकती है कि लेफ्ट साइड कोई फोटो दे दिया है कि व्हाट दिस फोटो रिजेंबल्स अबाउट। तो कोई भी चीज़, जो जिस चीज़ का फोटो के टेंट है तो आपको मुँह से टेंट निकाल बोलना पड़ेगा, टेंट है ये। बटरफ्लाई है तो मुँह से बटरफ्लाई बोलना पड़ेगा। वो ये पूछेगा कि ये फ़ोटो किस चीज़ के बारे में है। ओके, तो बस वो आपको वो वर्ड, एक ही सिंगल वर्ड का ही आंसर होगा, 2 वर्ड का भी आंसर नहीं होता है। ओके, सिंगल वर्ड का आंसर होगा, बस आपको वो बोलना है। नहीं आता है बाई चांस, घबराओ नहीं, कोई वेटेज नहीं है इसका साथ। आपका रिपीट सेंटेंस रीडर और अच्छा चला गया ना, इसका कोई वेटेज नहीं है। अगर 5 सही भी हो जाते हैं ना, ओवरऑल में ना आपका 1 मार्क बढ़ेगा ज़्यादा ज़्यादा, इसलिए कोई चिंता नहीं है। पर हाँ, हमें तो 90 लाना है तो 1 मार्क भी ज़रूरी है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। What are breakfast, lunch, and dinner examples of? मीन। ओके, अब ये जो वर्ड है मीन, मिल गलत हो जाएगा, MILL होता है। मीन में आपको थोड़ा सा आगे बांध देना पड़ेगा तो ही वो वर्ड कैच होगा। नहीं तो अपने को लगता है कि यार मैं तो सही बोल के आया हूँ, मार्क क्यों नहीं दे रहा। ओके, आपको प्रोनाउंसिएशन चाहिए रखना है। व्हाट आर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कॉल्ड, सो इट इज़ कॉल्ड मीन। ओके, मिल मत बोल के आना, प्रोनाउंसिएशन सही रखना। चलिए एक बार सुनते हैं। How many days does it take for a full moon to occur? हाउ मेनी डेज डज इट टेक अ फुल मून टू अकर? 30। ओके, 30। अब मेरे को सपोज नहीं पता, चलो 30 आंसर सही है या नहीं है मेरे को, पर ये पता है कि नंबर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सारे बोलो। ओके, हाउ मेनी साइड्स डज द ट्राइंगल हैव? पता नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ट्राइंगल में तो 3 होती है ऑब्वियस। हाउ मेनी साइड डज एन ऑक्टागन हैव? सोचता तो पड़ रहा है ना। 5, 4, 6, 8, 10 सब बोल दो, क्योंकि जो सही होगा वो अपने आप कैच कर लेगा। आपके पास 10 सेकंड बोलने को होते हैं, 5-6 वर्ड बोल दो, जो सही होगा वो कैच कर लेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जो सही वर्ड होगा उसके वो मार्क दे देगा। हाँ, अगर उसने 2 ऑप्शन दिए हैं पीछे कि विच एनिमल इज बिगर, एलिफेंट और चीता, उस टाइम पे जो पहला वर्ड बोलोगे उसका ही स्कोर है। उस टाइम पे मत कर देना कि एलिफेंट चीता, एलिफेंट चीता, एलिफेंट चीता, ये नहीं चलेगा। वो पीछे ऑप्शन दे रहा है तो उस टाइम पे यू नीड टू अटर ओनली सिंगल वर्ड, लाइक विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अब्रॉड? पासपोर्ट, 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 पासपोर्ट। 3-4 बार बोल दो। आप आंसर के लिए श्योर हो, 10 सेकंड आपको बोलने को देता है। आंसर के लिए श्योर हो कि यही आंसर है, उसे 2-3 बार बोलो। आपने एक बार बोल दिया, प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता सही है या नहीं है, बार बार उसे रिपीट करके बोल दो। ओके, इसमें यही एक छोटी सी ट्रिक है। अब मैं इस वीडियो के एंड में, अब जो आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी उसके अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये वीडियो खास एक बार देख लेना, ये एक ही बार देखना है। एक बार सुनाई दे गया, समझ में आ गया, याद कर लिया, डन। ओके,
રોકડા માર્ક્સ મિલ રહે કરો આપણે ગુજરાતમાં રોકડા માર્ક્સ મળે છે લઈ લઈએ આપણે રોકડા માર્ક્સ ચલો સી યુ સોરી. Which language is most commonly spoken in Britain? English. Which parts of the body are used for hearing sounds? The ears. In which organ of the body does thinking occur? The brain. How many languages can a monolingual person speak? One. What is a synonym of idea beginning with C? Concept. Language is usually expressed in two forms, spoken and what? Written. What white liquid from cows is often added to tea or coffee? Milk. Which item of cutlery has several prongs, usually 3? A fork. In what room of the house would someone be most likely to prepare meals? In kitchen. What category of food do carrots, potatoes and peas belong to? Fruits. Which liquid is the main constituent of all drinks? Water. What hard, white things in the mouth are used for chewing food?
teeth, What is the job title of a person who paints pictures for a living? an artist, What is the word for a building or room where art exhibitions are held? art gallery or art museum, What device is used to take photographs? a camera, In what building would you watch plays and musicals? at theater, Would a bus driver, an artist, or an accountant usually be regarded as having the greatest scope for creativity in their job? an artist, What is the occupation of someone who plays a character in a movie? actor or actress, In any particular family, who would be the oldest? The daughter, the mother, or the grandmother? the grandmother, What is the noun derived from the word happy? happiness, What's another word for co-worker? colleague or workmate, At what age does someone become a teenager? at 13, What's the name of the ceremony in which two people get married? a wedding ceremony, Would a family, a corporation, or a sports team probably include the most people?
A corporation. What is likely to be the smallest? A restaurant, a factory, or an airport? A restaurant. What unit of currency is used in the USA? Dollars. What does the C in CEO stand for? Chief. Cash usually includes banknotes and what? Coins. In any particular company, who is likely to earn more money? The managing director, the receptionist, or the caretaker? The managing director. What is the opposite of exporting? Importing.